Alright, so you watch a small video. So let's understand what actually happened there. In a video, there was a child, he was in busy market. There were car noise, ambulance noise. So the environment was full of different inputs coming towards him, and he was not able to take that input. So what he decided, he ran away from there and he entered into the restaurant where he had seen so many people sitting there. People were laughing, people were sipping the cold drinks, the sound of sipping, sound of laugh, sound of talking. There was a lady who was standing just next to the boy and she was tapping pen on the notebook, and that was very difficult for child to cope up with. The lights in the restaurant bothering him, the fan moving, the fan sound, fan visuals also bothering him. So he was completely in a mess. There was alarm sound, all of that was unbearable for the child. So whatever information is coming toward the child was not able to filter that, and child reached to the point where the blackout happened. Child gets completely overloaded, shut down, and just moved backward, bumped into the lady, and fell down. And there was darkness all around in his mind, right? That is what sensory overload is looking like. Let's understand one thing here. For us, that environment is very normal. We used to go in the restaurant, we used to sit in the restaurant, eat food there, and if someone called us, we easily pick up the call, we talk to other person, we focus on other person voice without bothering the noise around us, without bothering from the light. We easily do that because our brain has capacity to filter unimportant information. Brain can focus on important information. The child with having sensory processing differences, their brain is not able to filter all the information. So child take all the sound, visual, all the information together without filtering it, and brain gets overloaded. Maybe some of you have realized when you're working on the laptop, you start opening the tabs. So after opening so many tabs, that processing of your laptop is getting slower, and you reach to the point where you open so many tabs that your laptop gets hanged. Same way, the brain of a child who's having sensory processing differences work. So there's so much information coming and processing getting slower, and shall reach to the point where the brain shut down. So this is what we call sensory overload in a simple way. Here, the important point is whenever this kind of situation happen, what we need to do next for helping our child in that situation. Immediately after the meltdown, you have to follow three first steps. Number one, you have to stop giving information to the child, इंस्ट्रक्शन टू द चाइल्ड और स्टार्ट टेलिंग कि आपने कैसा बिहेव किया है, यहाँ इंसल्ट हो रही है, पीपल आर वाचिंग यू एंड सो ऑन, वट एवर. Why? Because child brain is already overloaded and not able to take more instruction. If you are giving more instructions, more inputs to child brain, child gets more overloaded, child become more disorganized. So it's better that stop giving instruction then and there, जो जनरली हम लोग नहीं करते, हम अपोजिट करते हैं. नंबर सेकंड इज इमीडिएटली चेंज द चाइल्ड एनवायरनमेंट. चाइल्ड को क्वाइट प्लेस पे लेके जाएं, वहीं पे कोई क्वाइट कॉर्नर वहां पे लेके जाएं जहाँ पे विजुअल्स बहुत कम हो, ऑडिटरी बहुत कम हो, साउंड्स बहुत कम हो, और उसको थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम दे उसके नर्वस सिस्टम को. नंबर थर्ड, बच्चे को वहाँ पे आप मसाजेस दे सकते हैं. अगर वहाँ पे कोई रूम आपके पास अवेलेबल है, जॉइंट कंप्रेशन भी दे सकते हैं, तो जॉइंट कंप्रेशन बॉडी मसाजेस आप दें. नंबर फोर्थ, बच्चे का कोई फेवरेट टॉय अगर आपके पास है, इमीडिएटली आप उसको टॉय दें जिससे उसका माइंड वहाँ पे डाइवर्ट हो जाए, लेकिन जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू करे, वो फिजिटिंग टॉय है तो वो आप उसको दे सकते हैं. सो दीज आर द वेज टू हेल्प योर चाइल्ड इन द सिचुएशन ऑफ मेल्टडाउन एंड अंडरस्टैंड दिस इज अ सिचुएशन ऑफ sensory overload, and this can happen with you and me as well, and we know how to manage it. When we get sensory overload, what we do generally is we go to the quiet place. Number one, we sometimes we listen to the music, sometimes we talk to our friends, sometimes we change the environment, sometimes we go for the drive, and so on. So there are multiple ways of doing that. So you and me face these kind of sensory overload so many times in life, but yes, our systems are that one mature that we are able to manage that. तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ में आएगी. नाउ देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको देने वाला हूँ. नंबर वन इज क्राइसिस मैनेजमेंट. जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चा ओवरलोड हो गया तो उसको हमें मैनेज करना है. क्राइसिस आ गए हैं तो क्राइसिस को मैनेज करना है. सेकंड इज एलिमिनेटिंग द रूट कॉज प्रॉब्लम. पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई थेरेपिस्ट, कोई प्रोफेशनल पेरेंट्स को ये गाइड नहीं करता कि आपको इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है कि फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशंस कम से कम आए, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए. क्योंकि जब हम क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, विच मीन्स वी आर नॉट वर्किंग ऑन क्राइसिस, तो क्राइसिस विल कीप ऑन कमिंग. बार बार क्राइसिस आएंगे, वी नाउ वी लर्न दैट हाउ वी कैन मैनेज दैट क्राइसिस.
बट उससे वो क्राइसिस तो खत्म नहीं हो रहे ना। तो क्राइसिस के लिए क्या करना है, हाउ वी कैन एलिमिनेट दैट रूट कॉज प्रॉब्लम, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड वेरी सिंपल इज वी हैव टू वर्क ऑन चाइल्ड नर्वस सिस्टम। हमें बच्चे के नर्वस सिस्टम को इतना मेच्योर करना पड़ेगा कि इस तरह के क्राइसिस के सिचुएशन ही ना आए। वो कैसे करेंगे, जब भी आपके बच्चे को सेंसरी ओवरलोड होता है, आप उसको जॉट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, तो 15-20 दिन के अंदर ही आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जहां से आपको पता लगेगा कि किस किस सिचुएशन के अंदर आपके बच्चे को सेंसरी ओवरलोड होता है। उस सिचुएशन में जाने से पहले, उस एनवायरनमेंट में जाने से पहले ही आइडेंटिफाई करके, तो आपको अपने बच्चे को प्रॉपर सेंसरी इनपुट देके फिर उस एनवायरनमेंट में लेके जाना है, जिससे आपके बच्चे का थ्रेशोल्ड ज्यादा हो अब सेंसरी इनपुट्स को लेने का, और मेल्टडाउन की सिचुएशन कम हो, और धीरे धीरे आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम इतना मैच्योर हो जाए कि जहां पे ये मेल्टडाउन की सिचुएशन, जहां पे ये सेंसरी ओवरलोड होने की सिचुएशंस कम होनी शुरू हो जाए। तो नंबर वन इज क्राइसिस मैनेजमेंट, वो आप समझ चुके हैं। नंबर सेकंड इज वी हैव टू प्रिपेयर चाइल्ड नर्वस सिस्टम। अब क्या कर सकते हैं, एक मैं टिप आपको यहाँ दे रहा हूँ, बच्चे को प्रोप्रोसेप्टिव वर्क करा दीजिए, हैवी वर्क करा दीजिए, पुलिंग पुशिंग एक्टिविटीज करा दीजिए, एनिमल वॉक्स करा दीजिए, हैंगिंग करा दीजिए, 15-20 मिनट बच्चे को रेडी करके फिर उस एनवायरनमेंट में लेके जाएं। ये सही उस तरीके से जैसे एक चाय का कप है, पूरा कप भरा हुआ है, उसमें और चाय आप डालेंगे तो निकलनी शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या किया, चाय का कप खाली कर दिया, तो अब उसमें स्पेस बन गया। अब उसमें थोड़ी सी चाय आप डाल सकते हैं, तो अभी वो एकदम छलकना शुरू नहीं होगी। सेम इन ए सेम वे, जब आपका बच्चा इस एनवायरनमेंट में जाता है, आपने उसको प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट दिया, तो आपने उसका थ्रेशोल्ड वहां पे इंक्रीज कर दिया। अब थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज हो गया है, नर्वस सिस्टम सेटल डाउन हो गया है, अब वो जब जाता है तो थोड़ा उसका थ्रेशोल्ड ज्यादा यहाँ पे है सेंसर इनपुट लेने के लिए। तो जो जब आप जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बच्चे का थ्रेशोल्ड ज्यादा देखने को मिलेगा। एकदम बच्चा सेंसरी ओवरलोड के सिचुएशन में नहीं जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसका नर्वस सिस्टम काम डाउन है, वो अब बच्चा अपने ऑप्टिमल अराउजल लेवल पे है और जहां पे उसका स्कोप है, तो एकदम वो ओवरलोडिंग वाली सिचुएशन में नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे हमें इस तरीके से अपने बच्चे को, नर्वस सिस्टम को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी एक टिप मैंने आपको दिया, बाकी और सेंसर्स के अंदर हमें बच्चे को देखना पड़ेगा, क्या बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, क्या बच्चा हाइपो सेंसिटिव है, उसके हिसाब से ही वो इनपुट डिजाइन होंगे। तब एक कंबाइंड इनपुट देके फिर हम बच्चे को उस एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे, और आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे का नर्वस सिस्टम रेडी होगा, बच्चा ज्यादा बेटर बिहेव करेगा सेम एनवायरनमेंट के अंदर, और इस तरह के ओवरलोडिंग वाली सिचुएशन आपको कम देखने को मिलेगी, और बच्चे का कोपिंग मैकेनिज्म भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप दोबारा उस वीडियो को देखिएगा, उसका दोबारा सारी मेरी बात सुनिएगा, और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं जाते हुए दोबारा से 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ। नंबर वन इज crisis management. So whenever the situation happen, you have to take that situation as a crisis. तो मैनेजमेंट उसका कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन सेकंड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, कि हमें उन सिचुएशंस को नोट डाउन करना है, और पहले ही हमारे बच्चे के ओवरलोड होने से पहले ही हमें उसके सिस्टम्स को रेडी करना है सेंसरी इनपुट्स देके, कि जब वो उस एनवायरनमेंट में जाए तो उसका थ्रेशोल्ड ज्यादा हो उस इनपुट्स को ले पाने का, और वो एकदम ओवरलोडिंग सिचुएशन में ना पहुंचे। So if we look at my child is in that condition, and we need to understand his behavior first, that he is not behaving inappropriately in the situation now. He is overloaded by the sensory stimulus which is there in the environment, which is there in the metro, which is there in the park, which is there in the mall, movie theaters, right? Most of the time we feel very bad when we go in the parties, when we go in the marriages, that my child is behaving inappropriately in crowded place. But and from now onwards, I believe, I hope you all understand that what your child going through, whatever your child is doing, showing behavior, that is not behavior just for sake of doing behaviors. That is what child is going through. There is bombarding happening in the child mind, and child trying to calm himself down. So if you start looking at that situation, then you will be able to help your child. So parents, the conclusion is the real solution is not to removing the word from the child environment. The real solution is to strengthen the child system in such a way this word stop feeling too much for him. I hope you understand this message and you start working in the same manner on a child. Thank you so much. Have a nice day.